अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 6 विच इज सेल सिग्नलिंग। So let's start. The process by which cells communicate with other cells within their body or with the external environment is called cell signaling, or simply the transfer of information from one cell to another is called cell signaling. स्टूडेंट्स कह रहे कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल सिग्नलिंग। या ट्रांसफर ऑफ जो इंफॉर्मेशन होता है एक सेल से दूसरे सेल को, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, सेल सिग्नलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास ligands and receptors. The signaling molecules are also known as ligands. They initiate signaling. Different types of molecules can serve as signaling molecules. They can be proteins, lipids, amino acid metabolites, gases, and many others. The proteins that respond to ligands are called receptors. Signaling molecules and receptors exist in several varieties. However, a signaling molecule will bind to specific receptor that typically binds only one type of signaling molecule. Next है हमारे पास reception. Reception is the target cell's detection of a signal molecule coming from outside the cell. कह रहा है कि रिसेप्शन क्या है कि टारगेट सेल के जिस सेल को हमने सिग्नल देना है कि उस सेल की जो रिसेप्शन है या डिटेक्शन है सिग्नल की, मॉलिक्यूल की जो आ रहा है किसी दूसरे सेल से, इस प्रोसेस को हम रिसेप्शन. A chemical signal is detected when it binds to a receptor protein located at the cell surface or inside the cell. Transduction: the conversion of signal from outside the cell to a form that can bring about specific cellular response is called transduction. कह रहा है कि जो आउटसाइड से सिग्नल आ रहा है उसकी कन्वर्जन करना ऐसी फॉर्म में कि वो सेल के अंदर क्या एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करे, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन. द बाइंडिंग ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल चेंजेस द रिसेप्टर प्रोटीन इन सम वे, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन. नेक्स्ट है रिस्पॉन्स. The transduced signal finally triggers a specific cellular response such catalysis by an enzyme, rearrangement of a cytoskeleton, or activation of specific gene in the nucleus, etc. Next है हमारे पास pathway of a signal from outside to inside. The process by which a signal on a cell's surface is converted into a specific cellular response is a series of steps called a signal transduction pathway. कह रहा है वो प्रोसेस जिसमें से एक सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में, बहुत सारे स्टेप्स में, इसको हम कहेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे. प्रोटीन सिग्नलिंग. Protein and peptide hormones are water soluble, so they cannot pass through plasma membrane. These hormones are environmental stimulus or the first messenger. They bind with their receptor on plasma membrane of the target cell, starting a series of events in the cell which generates a second messenger, e.g. CAMP cyclic adenosine monophosphate. Second messenger then trigger various changes in the cell including activation of enzyme, gene activation, etc. In figure 1.11 you can see protein signaling pathway. ये पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन मॉलिक्यूल आया. अब हमने कहा है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो सेल के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकता, ठीक है. तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल लगा होगा. ये आप देख सकते हैं, ये जो पर्पल कलर में लेबल है ये रिसेप्टर है. तो जो मॉलिक्यूल्स आ रहा था, ये जो सिग्नल है वो इसके साथ आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. जब इसके साथ बाइंड करेगा तो क्या करेगा, वो एक सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल उसको सिग्नल करेगा, जनरेट करेगा, एक्टिव कर देगा. वो आगे से किसी और मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा. तो इस तरह ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड हो जाएंगे. देन अब ये जो मॉलिक्यूल्स एक्टिव हुए हैं ये जाके न्यूक्लियस में जाएगा, इसमें से एक मॉलिक्यूल, और जो प्रॉपर डीएनए में जीन को एक्टिव या क्या करेगा, कर देगा ताकि एक सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट हो. नेक्स्ट है स्टीरॉयड सिग्नलिंग कि अगर जो सिग्नल आ रहा है अगर वो स्टीरॉयड है,
तो फिर कौन सा पाथवे फॉलो होगा? स्मॉल हाइड्रोफोबिक लिगेंड्स कैन डायरेक्टली डिफ्यूज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरेक्ट विद इंटरनल रिसेप्टर्स। कह रहा है कि ये जो स्टीरॉयड मॉलिक्यूल्स हैं ये डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी इंटर हो जाते हैं। और जो इंटरनल रिसेप्टर्स, जो फिर सेल के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। Important members of this class of ligand are steroid hormones. Steroids are lipids that have a hydrocarbon skeleton with four fused rings. Steroid hormones are lipophilic, fat-loving. It means that can freely diffuse across plasma membrane. They bind to receptors in either the cytoplasm or nucleus of the target cell, forming an active receptor hormone complex. This activated complex will move into nucleus and bind actively to DNA, acting as a transcription factor for gene expression. Estrogen, progesterone, and testosterone are examples of steroid hormones. In figure 1.12 you can see steroid signaling pathway. एक स्टीरॉयड हार्मोन आया, वो किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बजाय डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर सेल के अंदर चला गया, साइटोप्लाज्म अंदर चला गया। तो सेल के अंदर एक स्टीरॉयड रिसेप्टर था, ठीक है, उसके साथ बाइंड कर गया। जब उसके साथ बाइंड कर गया तो क्या बन गया? हार्मोन स्टीरॉयड कम्प्लेक्स। ये जो कम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियस में चला गया और किसके साथ जाके बाइंड कर गया? डीएनए के साथ। और इसने क्या स्टार्ट कर दी? मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सेल्स नीड फूड मटेरियल, साल्ट, वाटर एंड ऑक्सीजन एक्सेट्रा। कह रहा है कि जो सेल होता है उसको भी फूड चाहिए, साल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दे आल्सो नीड टू गेट रीड ऑफ सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा जितने कुछ सब्सटेंसेस वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर बाहर थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, उसको गेट रीड ऑफ यानी उनसे छुटकारा चाहिए, उसने उनको एलिमिनेट भी करना है, लाइक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। Membrane transport is a set of transport mechanisms that control the movement of fluids, ions, and molecules through biological membrane. तो कह रहा है जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ये एक मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करता है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Membrane transport is dependent upon permeability, fluid concentration, size and charge of fluid. There are four type of transport mechanism in a cell. कह रहा है कि जनरली जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है सेल में चार तरह के होते हैं, कि चार तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं या मूव करते हैं इनटू एंड आउट ऑफ सेल। दीज आर सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Simple diffusion, facilitated diffusion and osmosis are passive transport mechanism. इसमें से जो पहले तीन है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये कह रहा है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। लास्ट वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इन चारों को हम मैकेनिज्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन आ जाता है सिंपल डिफ्यूजन। एज द नेम इंडिकेट कि सिंपल डिफ्यूजन हो रही है तो मॉलिक्यूल सिंपली हाई टू लो कंसंट्रेशन में क्या कर डिफ्यूज कर रहा है, मूव कर। We can now diffusion is the movement of molecules from region of higher concentration to region of lower concentration down a concentration gradient. The molecules can travel directly through membrane in simple diffusion के simple diffusion में molecules जो है ना simply membrane से क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। Small molecules such as water, carbon dioxide, oxygen can pass through membrane easily. So diffusion equalizes the concentration of these molecules inside and outside the cell. Each type of molecule moves down its gradient independently of other molecules. For example, oxygen diffuses from lungs into blood, while at the same time carbon dioxide diffuses into opposite direction. Next आ जाता है हमारे पास facilitated diffusion. Most water soluble molecules cannot pass through phospholipid layer. कह रहा है कुछ जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली फॉस्फोलिपिड जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन है उसमें से पास नहीं कर सकते। द मॉलिक्यूल्स शुड बी small and non-polar to transfer travel across the membrane. These molecules can diffuse across only with the help of two type of transport proteins. They are channel proteins or carrier protein. कह रहा है कि ये जो है ना ये डिफ्यूज कर सकते हैं थ्रू with the help of two type of transport proteins, channel protein and carrier protein. Channel proteins help in entry and exit of substance in the cell. There are two type of channel proteins, open channel protein and gated channel protein. Open channel protein create a pore in the cell membrane and allow the charged molecules to pass through. The gated channel protein are either closed or open and regulate the entry and exit of substance. Carrier proteins are present on cell membrane. They carry the molecule
change the shape of molecule and release the molecule to other side. Temperature and saturation affect carrier proteins. Now we can define facilitated diffusion. Is a type of diffusion in which molecules move from region of higher to lower concentration assisted by a carrier. जो सिंपल डिफ्यूजन थी उसमें भी मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहे थे विदाउट एनी असिस्टेंस क्योंकि उनको असिस्ट उनकी हेल्प नहीं कर रहा कोई कैरियर नहीं वो सिंपली डिफ्यूज करें लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या कि कोई फैसिलिटेट कर उनकी हेल्प कर रहा है या इसमें हेल्प कर रहे हैं कौन कैरियर्स Next osmosis. A semi-permeable membrane is an impervious sheet perforated with tiny pores. Pores allow solvent molecules, for example water, to pass through by diffusion but not larger solute molecules such as sugar. The examples are egg membrane, plasmid membrane, cellophane membrane. Comparison between simple and facilitated diffusion. You can see in table 1.3 difference between simple diffusion and facilitated diffusion. A type of passive transport, a type of active transport, passive transport. Substances move from area of region of higher to lower. Substances move from area of region of higher to lower concentration. Does not directly require chemical energy. Does not directly require chemical energy. Transport proteins not required transport proteins required. Rate is generally slower but more straightforward. It does not rely upon binding capacity. Rate is generally faster but affected by factors such as temperature and type of membrane. Small non-polar molecules like oxygen and carbon dioxide diffuse easily. Polar molecules like glucose and amino acids, large ions, sodium ions, chloride ions, and large non-polar molecules, e.g. retinol, imply facilitated diffusion via membrane proteins across the plasma membrane. Now we can define that the process by which molecules pass from solution of low concentration to high concentration through a semi-membrane is called osmosis. The example of osmosis are feeling thirsty after having salty food, dialysis of kidneys, swelling of resins and seeds when they are soaked in water. Next one is active transport. ये जो पहली तीन हमने पढ़ी है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन osmosis ये type of passive transport भी active transport the movement of molecules or ions across a membrane from region of lower to higher concentration against a concentration gradient वो थी down the concentration gradient ये क्या है concentration gradient के against is called active transport movement is usually in one direction only to achieve the movement it needs energy एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको क्यों कहते हैं क्योंकि अब जब ये रीजन ऑफ लो टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए मूव कराने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी primary active transport the energy is supplied in the form of ATP which is an energy carrier made in respiration प्राइमरी में कह रहा है कि जो एनर्जी सप्लाई की जाती है वो ATP की फॉर्म में दी जाती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट Without respiration, active transport is not possible. Sodium potassium pump is an example of transport. Cell membranes have sodium pumps that actively pump ions out of cell. In animals, as the sodium pump is coupled with a potassium pump, which actively move potassium ion from outside to inside. It is importance. Its importance is revealed by the fact that more than a third of ATP is used to pump sodium and potassium. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है जी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी वो कौन सी एनर्जी यूज करता है एटीपी की फॉर्म में इट टेक्स प्लेस अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन couples the movement of electrochemical ion like sodium or hydrogen down its electrochemical gradient to the upward movement of another molecule or ion against the concentration or electrochemical gradient. Now we can define active transport as a process which involves movement of molecules from region of lower concentration to a region of higher concentration against a gradient or obstacle with the use of external energy. Next हमारे पास active transport in plants. Active transport takes place in root cells by absorbing water and minerals. Active transport always leads to accumulation of molecules and ions towards one side of membrane. This mode of transportation in plants is carried out by membrane proteins and transports these substances from the lower to the higher concentration. Next हमारे पास examples of active transport. Some of the best examples of active transport include
फेजोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय मैक्रोफेजेस। फेजोसाइटोसिस कहती है कि इनगल्फिंग या ईटिंग ऑफ बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस, movement of calcium ions out of cardiac muscle cells, transportation of amino acid across the intestinal lining in the human gut, secretion of proteins like enzymes, peptide hormones, and antibodies from different cells, functioning of the white blood cells by protecting our body by attacking disease causing microbes and other foreign invaders. So students, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।